थैंक यू सर। सर हम लोग का जो इधर से आवाज है आपका उधर सुनाई जा रहा है सर? अच्छा ओके ओके थैंक यू सर। सर अभी हम लोग का सर एक्सपर्ट है, हम लोग को सीनियर सर है अनिरुद्ध सर। सर को हम लोग को सोसाइटी का बारे में, कॉलेज का बारे में स्टार्ट करने के लिए थोड़ा बता दीजिए सर। सर अभी भी अनिरुद्ध सर है हम लोग का साथ सर। एक मिनट सर, अनिरुद्ध सर शुरू करो सर। हाँ हाँ सर ओके अभी अनिरुद्ध सर का सर ओके रुकिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। We have with us Dr. Robikant Gunte, retired professor of JNV University. We are thankful to have him with us today. We are sorry there is a audio problem, some technical issues are there. We could not hear him properly. This is the first international CRE program we are organizing. And from such a place, a very remote place in North Bengal, you know, all these parts are already not very developed for various reasons. And Polarsbody is a very remote place. And from such a place, we have been able to conduct during last 1 year 4 CRE programs online. One was state level program, other 3 were national level programs. And today we are hosting an international program. As it is an international program, there are participants from other countries also. So most of the lectures will be in English. कुछ लेक्चर्स शायद हिंदी में भी होगा, ज्यादातर इंग्लिश में ही होगा। आप लोग म्यूटेड रहिए, वीडियो ऑन रहना कोई जरूरी बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने अपना नाम नहीं डाला मीटिंग जो आप लोग एंटर हुए, आप लोगों को किसी को मोबाइल नंबर दिखा दे रहा है, प्लीज डू नॉट यूज योर मोबाइल नंबर्स और नेम्स ऑफ मोबाइल्स। प्लीज रीनेम और अपना नाम डाल के आप ज्वाइन कीजिए मीटिंग। We have got a plethora of resource persons from all over the country. Very resourceful. You'll be blessed that you're getting such resource persons. You'll learn a lot of things. Please give your comments and suggestions in the chat box. We will allow you to talk only if the resource person allows you. तब तक आप लोग म्यूट रहिए। क्वेश्चन अगर पूछना है आप चैट बॉक्स में डालिए, कोई सजेशंस हो चैट बॉक्स में डालिए। पीछे अगर टाइम हो, अगर रिसोर्स पर्सन एग्री करे तो फिर आप लोगों को बात करने दिया जाएगा, आप लोग खुद क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये जो पलाशबड़ी है इसके बारे में आप लोग को वीडियो भी एक दिखाने जाएगा, क्या हालत है, कितना रिमोट एक प्लेस है, कहाँ से हम ये सब कर रहे हैं, ये सब आपको भी जानना चाहिए। आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग क्योंकि बहुत सारे हैं यहाँ में, ये लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी से है, बड़े बड़े जगह से हैं, जहाँ हम जानते हैं कि होल वेस्ट बंगाल में सिर्फ यही एक ही कॉलेज है जहाँ से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। 2006 में जो ये स्वप्न सोसाइटी आया था, उसके बाद 2013 में हमारा ये जो स्कूल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स खुला गया था। 2016 में हमारा ये कॉलेज
तोराई डूअर्स स्पेशल एजुकेशन कॉलेज इसको ओपनिंग हुआ था। कितना रिमोट प्लेस से हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मेनली a man like Taposh Bormon, who is the secretary of Circle Society, the way he is driving us ahead, the way he is inspiring everyone, and his team consisting of Amitabh Bormon, Ataur Rahman, and so many others, the way they are building the college, they are building the fraternity, they're increasing our reach. Earlier it was only within this area. Now we have gone to national level, we've got international level, and so many things are happening. So we are especially thankful to the team that they have been able to arrange this. So I think it is time that we can start our program. If we can find out if our resource person Nita Jain is there, then we can start our program. Thank you so much for being with us. Yeah, Taposh ji. Yeah. थैंक यू सर। Yeah, please start कीजिए। अगर person है तो I can introduce her. हाँ सर, अभी तो सर आज नहीं है। सर नीता मैम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। मैं कुछ टाइम पहले फोन करके बताया मैडम को, अभी सर ज्वाइन कर लेगा सर। अच्छा, तो आपको वो जो वीडियो है ना, वीडियो थोड़ा दिखाइए ना। हाँ हाँ सर, वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो वीडियोটা শুরু করে দাও। कोई क्वेश्चन हो प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। कोई प्रॉब्लम हो चैट बॉक्स में डालिए, नहीं तो व्हाट्सएप में लिखिए। लेकिन जिन लोगों को नाम नहीं है, जिन लोग सिर्फ मोबाइल नंबर से ज्वाइन किए हैं या मोबाइल को नाम से ज्वाइन किए हैं, उन लोग काइंडली आपको नाम डालिए उसमें, नहीं तो आपको रिमूव किया जाएगा पीछे और आपको एब्सेंट मार्क किया जाएगा। अभी जो हम लोग नेक्स्ट जो रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर नीता जैन मैम, मेरा भी गुरु है मैडम। मैम को हम लोग को सीआरई इसका मतलब इस बार से टोटल 3 बार मैडम हम लोग का साथ जुड़ा है। मैडम को मेरा कॉलेज और मैं स्टूडेंट का हिसाब से मैडम को प्रणाम। आगे वाला दिन में हम लोग को साथ भी रहिए। मैडम आप थोड़ा रिप्लाई दीजिए। मैडम मैम Dr. Nita Jain, can you hear me? Dr. Nita Jain. Can you hear me, Dr. Nita Jain? Dr. Nita Jain, can you hear me? स्लाइड शो में जाइए या F5 से भी जा सकते हैं।
Dr. Neeta Jain, can you hear us? Dr. Neeta Jain, তাপস ফোনে পাচ্ছ না ওনাকে? सर फोने पाচ্ছি सर, दादा रिंग করছি। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है मैम। हाँ स्क्रीन तो देखा ही जा रहा है बट आवाज आपका नहीं आ रहा है। एक बार मैम आप चेक करिए तो स्क्रीन में आपका आ रहा है सर, मैं आ रहा है मैम। তো স্যার ওখানে তো সাউন্ড তো ওনার ফুল দেওয়া আছে বললো। হ্যাঁ ওনার তো সাউন্ড তো ফুল দেওয়া আছে বললো। ওনার এখানে তো ওনাকে দেখতেই পাচ্ছি না, উনি হ্যাঁ ভিজুয়ালটা না দিলে। স্ক্রিনে তো ওনার আসছে আর কি। হ্যাঁ উনি তো, ওনাকে দেখতে পাচ্ছি না তো স্ক্রিনে, যে পিপিটিটা দেখাচ্ছে ওনার ভিডিও দেখতে পাচ্ছি না তো। কিন্তু না পিপিটি উনি স্ক্রিনে দিয়েছে এটা দেখা যাচ্ছে আমাদের এখানে। হ্যাঁ পিপিটি দেখেছি, পিপিটি তো পরে কথা, আগে তো ওনাকে চেহারাই দেখতে পাচ্ছি না, উনি তো শুনতে পাচ্ছেন না, বুঝতে পারছি না। मैम एक काम करिए तो मैम आप पहले निकल जाइए, निकलने के बाद फिर दोबारा ज्वाइन करिए तो। अच्छा ठीक है। ভিডিওটা পাওয়া যাচ্ছে না? স্যার ওনাকে একবার বের হয়ে যেতে বললাম, বের হয়ে আবার জয়েন করার জন্য বললাম। না না না, তোমার ভিডিওটা পাওয়া যাচ্ছে না? স্যার ভিডিওটা আছে, উনি জয়েন করে গেছে তো এর জন্য আর শুরু করলাম না আর কি। না ঠিক আছে, উনি আসতে না, এটা শুরু হোক পরে বন্ধ করে দেবে। দেখো তো नीता जैन के को होस्ट করে দাও। Tapas, can you hear me? हाँ, good morning Dr. Jain. Yes, good morning, Now sir. you're clear. Yeah, now it's clear. Yes. Yes, we can start here. So you can start your presentation. In the meantime, I will introduce you to them. सर एक्चुअली मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है, लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो रहा, उसमें आवाज नहीं आ रही है, पर स्क्रीन जो शेयर करूंगी वो मैं लैपटॉप से करूंगी।
हाँ कीजिए कीजिए हाँ By the name of Akshay. by the name अक्षय ओके By the name of Akshay, I'll share the screen और मैं यहाँ से अपने फोन से इसको कनेक्ट कर रही हूँ because लैपटॉप में आवाज का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वहां से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है हमारी। अच्छा नहीं ये तो ठीक है, ये साउंड पूरा क्लियर है बिल्कुल। हाँ ये साउंड क्लियर है ना सर? 0359। Good morning everybody. गुड मॉर्निंग मैम। नहीं इन लोगों को हम म्यूट करके रखे हैं। Okay. Thanks to Doctor. तापस एक बार अक्षय को आप डिसेबल कर दीजिए ताकि आपको शेयर स्क्रीन हो जाएगी। अच्छा मैम, अक्षय ना? हाँ अक्षय नाम से। Yes, we have our resource person here with us. We have with us today Dr. Neeta Jain, Associate Professor in Special Education, JNB University, Jodhpur. Can you see the screen? ma'am. See ma'am, see. अच्छा ठीक है, fine. Now I'll start. Okay, Tapas? Okay. And she will be talking on e-content designing for online teaching learning. Madam, please start. Yes. Thanks to Dr. Aniruddha Burman. Thanks to my colleague Tapas for organizing this international conference on e-content designing for online teaching and learning. Okay, now I'll start with the topic e-learning. What basically e-learning is? In this pandemic, we are almost everybody familiar with this term e-learning. It is an online education. As you can see in this picture presentation of an image where all the girls and boys are sitting next to the computer and with the mobile or the computer or the laptop, they are in with hand and seeing the screen. So this online services, which we can say is being a game-changing development in terms of the educational opportunities it provides. It is a basic, easy source of convenience because we are taking a course or on own time and from our own homes. What this basic e-learning and online learning means? Online is a form of training or teaching over the internet. As what we are doing right now, we are sitting in front of the screen, we are sitting in front of the computer, PC or mobile phones or iPads, and we are doing online learning, which is organized by my dear colleague, that is Tapas. This is online learning. It is widely used tool to teach and train individuals for both academics and corporations. Okay, we can say that online learning, it is basically of two categories, that is synchronous and asynchronous. Synchronous, we can say, that is similar to the traditional classroom in that you are meeting at a particular time via audio, video, streaming, or a chat room. In simple words, we can understand that synchronize, that means in that situation or scenario, the teacher is present at the same time as well as the learner is also present. It is via online learning through the use of video conferencing, line chat, or instant messaging. They require, that is, they base is the online learning and they engage each other at the same time as we are engaging ourselves, but from the different locations. You are in Bengal, I am in Rajasthan.
So we are from different locations and we are doing online learning, and we are learning into the different aspect which everybody permits because their own time space is required by them, and it is the easiest mode of learning. So we can say that synchronous is a two-way online or a distance learning education, and it is very helpful for all of us. Second, we can say that is asynchronous. What is asynchronous means? It allows you to work at your own time and pace with periodic communication with the instructor. It takes a lot of patience, motivation, self-confidence, dedication, and a general knowledge of using a computer. In simple terms, I can explain you that asynchronous means it is applied to various forms of digital and online learning in which students learn from instructions such as pre-recorded video lessons or game-based learning tasks. Because in this, sometimes we have to give a comfort zone to the students. For them, the teacher provides with them the material which is pre-recorded, and as per the convenience of the children and the students, they can again start with the pre-recorded video lessons. So whenever they, during the time of examinations or during the time of free time for them, they can see the pre-recorded video lessons, and according to them, the facility is provided and they can enjoy the lessons. So it is a pre-recorded video lessons and a game-based learning task which is required by the students, and the students complete their own task within the time space. And it is being delivered in a person to a person in a real time. It allows students to view instructional material each at any time of choice they require. Because when we come to the normal child, they have got their time space. As right now, what we are doing, the students in the classrooms or students in the school, they are being provided with the pre-recorded materials. So whenever their requirement is there, they can go to the site and check what the material is provided by the teachers. Even MCQ questions and short-based question answers, and even the PDF form of the chapters has been provided in the settings. So now we come to the nature of disability. What is this nature of disability? It is e-learning. Basically, we must understand what is e-learning. It is an electronic accessibility. Electronic media has been used so that it becomes accessible for the individual to learn very effectively and efficiently. Now we belong to the disability sector. So how it can be helpful for blind? It needs websites need to be interpreted by the program which read text aloud and describe any visual images. As we know, for blind, this programming is very much required because it requires a text loud when they are not able to see, but when they are able to hear. So whatever the recorded messages are there, they should be such that they should be loud enough for the child to listen what the teacher has communicated to him or her. Then some visual images can be described. So according to the size and according to the need of the child, this programming can be done. Then the second vision is that is the low vision. Web page needs adjustable size fonts and sharply contrasting colors. Because if the person has low vision and if the font size is very, around 8, 10, 12, the things are not very visible by the child. So the adjustable size font should be according. So the chapter readable is equally done by the low vision child, and the sharply contrasting colors also should be there so that it suits the child to see what he wants to study. Then we come to the deaf audio content. It should be accompanied by text versions of the dialogues, because if it is easier for the child to accommodate what the child requires, that is the foremost duty of the special educator that should be done by the teacher. So
For this also, the deaf audio content should be accompanied, that is, the version of the dialogue should be there. So it becomes easier for the child to see the content. Sign languages, videos, sign languages should be there done by the teachers, so they help them to learn very easily. And even the special educators, we should learn according to our field specialization. We should learn the sign languages, and so it becomes very easy for the child to explain with the help of the audio content to make it more accessible. So we can say that e-learning is an artifact of relationship between the learner and the learning environment. The person who wants to learn and the person should be with a friendly learning environment. Right now, what we are doing, you are the learner, you are listening from me, and Tapas has provided us with the learning environment of e-learning, and that becomes easier for you to listen to me. We can share our videos, even we can chat. Many of the students are giving me the messages. So good morning to everybody, because I have to reply to the messages also. So I welcome you all participants in this e-learning program, which is organized by your committee members. So next we come to the goals of learning. What are the major goals of learning? That is, it enhances the quality of teaching and learning. Foremost important thing for the special educator is that the quality should be maintained. What we do is we produce the quantity, but the quality is deteriorating day by day. So that should not be done. It should enhance the quality of teaching and learning. For example, if we think the child is not paying attention to what we are teaching in the class, so with the animations, with the pictures, with the videos, you should make your things very attractive. So it becomes very much keen observer for the child to sit in the front of the computer or the laptop and to share the screen. If you always say, no, you have to listen to me, you have to listen to me, so the children are not paying attention to you. In spite of that, if you provide him with the animations, pictures, diagrams, then it becomes very interesting for the child. Then we have to meet the learning styles or needs of the students. My need is different, right? Your need is different, because we all have individual differences. As we have individual differences, so the learning style should be according to the pace and need for the students. हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम हमेशा एक ही लर्निंग स्टाइल और स्ट्रैटेजीज को यूज करें, क्योंकि हर में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है. कोई बहुत जल्दी ग्रास्प करता है, कोई जल्दी ग्रास्प नहीं करता है. सो वी शुड कीप दिस इनटू कंसीडरेशन. ओके, इट इंप्रूव्स द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. हम बहुत इफिशिएंटली वर्कआउट कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर. हम बहुत तैयार नहीं होते. वी डोंट वेस्ट टाइम. वी डोंट वेस्ट टाइम इन ट्रांसपोर्टेशंस कमिंग एंड गोइंग. So efficiency and effectiveness also improves our e-learning aspects. Then it improves user accessibility and time flexibility to engage learner in the learning process. That means time flexibility is always there. For example, we had started this with, a peak of time that was of 11 time. So we had to start, but sometimes, my mic was not working. Okay, it was not audible to you. It happens because the rainy season is there. So I'm not giving the excuses. I was with my all preparation, but due to the weather conditions, it was so. So according to the time flexibility, we can manage. We could start it with 5 minutes after that. So the flexibility for the students and for the disabled children should always be required, because they are always into a mood fluctuation aspect. Sometimes they are ready to learn and sometimes they are not ready to learn. To engage them in the learning process is a very difficult task for the special educators. So what should we do? What we should we do? The main aspect is that before engaging them into the curricular aspect, provide them with the different classes that of extracurricular activities. 5 minutes, we need brainstorming. For these 5 minutes brainstorming, what we can do, we can engage them with general talks. We can engage them with poetry recitation. We can engage them with music.
We can engage them with dance. So what is this? This is a brainstorming exercise for the disabled children. Once they get the inner potentialities to come out, so they become very easy and comfortable to get a report with you. So time flexibility and to engage them in the learning process is required. After the extracurricular activities, now what you can do, you can engage them into the curricular aspect. That is very important. So now, this is very simple. You can see, हम जैसे हिंदी में इसको तराजू बोलते हैं, हमारे दोनों पार्ट्स इसमें बैलेंस है. हम ये नहीं कह सकते कि पहले हमारा बुक फॉर्म अच्छा नहीं था. बुक फॉर्म भी हमारा बहुत अच्छा था. We used to, go to the classroom. We used to go to the school. और हमारा स्कूल जाने का भी एक अलग मजा होता था. Because हम टीचर से इंटरेक्ट करते थे, हम डिफरेंट क्लासरूम के बच्चों से इंटरेक्ट करते थे, हम अपने क्लासरूम के कंफर्टेबल जोन में बैठते थे, हम वहां पे चॉक, ब्लैक बोर्ड, डस्टर को यूज करके हम वी आल्सो यूज्ड टू एंजॉय ऑन टीचर्स डे. हम टीचर बनते थे और हम ब्लैक बोर्ड्स पर लिखते थे. सो व्हाट वाज दिस? दिस वाज अगेन अ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजॉयमेंट व्हिच वी यूज्ड टू डू. बट नाउ ड्यू टू पैंडेमिक, ड्यू टू all these COVID situations, now this online engagement services are being given much importance, and you can see at this at a glance. Now the screen, mobile screen, the computer screen, the laptop screens, okay, we are all using this. Okay, I can agree with you all, we have advantages and disadvantages, but that is a different aspect. Both the scenarios, both the things can be managed by an individual if really we want. Okay. So what are the advantages of e-learning? It saves time and money. As you all know, as we have to move out, we have to get ready, because I can understand the females take much of the time to get ready. So it saves time. She can manage the household responsibilities. She can manage all the, housing stuff which she want to do with the help of this e-learning. And even the money is saved. We don't need to go to the transportation facilities, and even the money is saved regarding this. So it saves time and money. One of the most obvious advantages of e-learning is that we can save time and money because you can engage your schedule. You can take online courses at your most convenient time, whether it is early in the morning, whether it is in the afternoon or evening. You save money because you don't have to pay for the transportations or worry about eating on the own go. हम घर बैठे ही अपना एप्पल भी ले लेते हैं, और जैसे अभी बहुत लोग मैं देख रही हूँ स्क्रीन पे कुछ अपना breakfast लेके बैठे हुए हैं, because it is a breakfast time. I can understand. You can enjoy my class also, please. Okay. So you can do eating, you can have a cup of tea or coffee along with this. Okay, then the second advantage of e-learning is it is better retention. E-learning different. Okay, also you can share your thoughts and opinion with others. The more engaging the lessons, the more students can remember the informations, because we have 4 processes in our memory. That is retention, recognition, recollection, and saving method, reconstruction and saving method. So retention is very important. हम कहते हैं ना, हम मूवी देख के आते हैं, कोई हमें स्टोरी सुनाता है तो हमें याद नहीं रहती है, परंतु जब हम मूवी देख के आते हैं तो हमारे पास वो पिक्चर हमारे दिमाग के अंदर छप जाती है, because we have seen that content, and because of this हम क्या करते हैं, सारी चीजों को समझ जाते हैं. So better retention is also important advantages of e-learning. Okay, then the third advantage is better use of different platforms like pedagogy, which provides interactive content. हमेशा हमारे पास interactive होना चाहिए. जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर सपोज मैं आपको सिर्फ लेक्चर देती हूँ, that becomes very difficult for you to listen. पर कभी कभी चीजें हमारी ऐसी होती है जिसमें हम उसको इंटरेक्टिव बना सकते हैं. अभी क्योंकि हमारा ग्रुप बहुत बड़ा है तो हम उसको इंटरेक्टिव सेशन नहीं बना सकते हैं, बिकॉज अगर हम माइक्रोफोन्स ऑन करेंगे तो हमारी वॉइस इको हो जाएगी.
इंटरेक्टिव सेशन वही माना जाता है when it is a two-way communication process. Okay, so हमारा जो सिंक्रोनाइज और सिंक्रोनाइज मेथड्स हमने जो एडवांटेजेस का पढ़ा था पहले, हम उसको वहां पे यूज कर सकते हैं. Then comes our personalized learning. You can choose your learning path and study at your own pace. Personalize means अपने लिए. जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं, आपके होम के एनवायरमेंट में बैठे हैं और इजीली उस चीज को सीख रहे हैं. So you become more motivated and invested in this course. Okay, so next is your cost effective. Cost effective, that means students aren't the only ones that can they save money in e-learning. सिर्फ हम स्टूडेंट्स ही नहीं हैं जो इसमें अपना पैसा सेव कर रहे हैं, पर बहुत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने अभी अपना सेटअप किया है और सेटअप अभी स्टार्ट नहीं करा है. यू नो, दे आर द बिगिनर्स. वो क्या कर सकते हैं, ये सेटअप अपने घर के अंदर सिनेरियो में भी चला सकते हैं, तो उनको कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत वहां पे नहीं पड़ती है और वहां पे उनको जाना नहीं पड़ता है. तो एक प्रकार जो इन्वेस्टमेंट वो अपने वहां पे करना चाहते हैं, तो वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है अपने टीचर्स के ऊपर, अपनी जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर नहीं करके, जो लर्निंग मटेरियल है, जो बुक्स है, जो हमारे पास नोट्स जो हमें स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जो पीडीएफ हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसमें हम ये चीजों को कर सकते हैं. एंड दिस which translate to reduce monetary spending. This is a cost effective, another advantage of e-learning. Then it becomes environmental friendly. Okay, e-learning is more environmentally friendly because it doesn't contribute to the pollution brought out by paper productions. Environmental friendly बहुत होना जरूरी है because this is the most important advantages of the e-learning. Then sometimes we are provided with the online tools. हमें ऑनलाइन टूल्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें हमारे पास जो भी क्वेश्चनर मेथड्स होते हैं, जो भी हमारे पास परफॉर्मर्स होते हैं, हम इमीडिएटली फिल करके हमारे स्टूडेंट्स को भी बोल सकते हैं फिल करने के लिए और हम इजीली सेंड कर सकते हैं. द अदर एडवांटेज ऑफ ई लर्निंग इज इजी शेड्यूल. वी कैन प्लान आउट very easily and very effectively, and for this only a prior 2 or 3 days of time is required by an individual to perform this. Okay, then comes the limitations of e-learning. Always every aspect has its limitations, and limitations of e-learning is that it needs internet connection. जैसा आपको अभी मैंने एग्जांपल दिया था, due to bad weather हमारा ये इंटरनेट कनेक्टिविटी was very poor. तो इंटरनेट कनेक्शन is required and many of the agencies are helping you out. हमें फ्री वाईफाई सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है बिकॉज पहले हमें पेबल होता था, परंतु आजकल काफी एजेंसीज और हमारी प्राइवेट सेक्टर्स आ गए हैं जो हमें ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड स्टूडेंट्स गेट अ बेनिफिशियल एस्पेक्ट आउट ऑफ दिस ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस. Then secondly, it comes to the proper knowledge of the computer is needed. You go into any of these sectors. जैसे अभी आप इस पे कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं या किसी भी सेक्टर में जाते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर्स, आप भी ये चीज सीख लीजिए कि आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना एक बहुत नेसेसरी प्रोग्रामिंग होना चाहिए. बिकॉज whenever you go, आजकल हमारा डिजिटल वर्ल्ड होता चला जा रहा है and we are going into that aspect. So proper knowledge of computer is also required. Then students must be self motivated. हमेशा जब हम कुछ चीज सीखते हैं तो always I tell you and always I tell you in my lectures also, क्यों ना हम हमेशा अपने आप को एक शाबाशी दें. शाबाशी कैसे दी जाती है? Always pat on your back. Yes, I have done a good job. Because we also need self motivation. That is very much important. Okay. Then lack of interpersonal communications. हमेशा ये होता है कि हमारा जो एक इंटरेक्शन प्रोसेस होता है, जब हम स्कूल्स में जाते हैं, हम पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम स्कूल में टिफिन शेयर करते हैं, इवन वी शेयर आर अगर कभी हमारे को सैडनेस होती है तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं. तो जो एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होना चाहिए वो हमारा यहाँ पे लैकिंग बिहाइंड हो जाता है. Then we come to the applications of e-learning, that is attention of impaired child. Child is easily distracted by noise in the environment. As you all know, I have developed one test of ADHD, that is attention deficit hyperactive disorder. इसमें 3 हमारे पास जो फैक्टर्स होते हैं,
insensitiveness, overprotection and impulsivity, right? तो ये हमारे लिए एक बहुत मेजर क्राइटेरिया हो गया है कि हम ई लर्निंग के लिए हमारे डिसेबल बच्चों को कैसे बिठाएं, बिकॉज दिस बिकम्स अ मेजर टास्क फॉर द पेरेंट्स. बिकॉज थोड़ी सी आवाज आती है, द चाइल्ड इज इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय द नॉइज इन द एनवायरमेंट. So what should we do? We should provide such an environment which is less noisy, or a separate room should be provided for the child to sit and concentrate on this aspect. Best way to avoid is to download the material and engage the child with their own time. कभी हमारे घर में फंक्शंस होते हैं, कभी हम दूसरी एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी टीचर्स हमें मटेरियल दे रही है उसको हमें डाउनलोड कर लेना चाहिए, और डाउनलोड करके हमें अपने चाइल्ड को वो चीजें सीरीज वापस दिखानी चाहिए जिसको हम दिखाना चाह रहे हैं. तो कुछ उसका जो कंटेंट क्लास में पढ़ते पढ़ते छूट जाता है तो वो वापस चीजों को रिवाइज कर सकता है, बिकॉज आवर चाइल्ड नीड्स रिपीटेशंस, एंड सो बिकॉज ऑफ दिस रिपीटेशन इज रिक्वायर्ड so they can engage themselves in that activities. Then audio element is the outcome of product of the ideas of the teacher or special educators to engage child with attractive e-content. As I told you, अगर मेरी आवाज नहीं आती तो मेरा आज पीपीटी का कोई मतलब नहीं रहता. तो audio element is very important, because if we hear we can respond, and when we can respond, because every stimulus has a response. हम ऐसा थ्योरी को भी पढ़ते हैं, तो जैसे हमने इसको पढ़ा है तो immediately we can respond. So special educators can engage the child with the attractive e-content. Then we come to the dyslexic child. Okay, dyslexic child, that is description of the material in writing is very important. As you know, the dyslexic child has reading and writing difficulties. He is not able to understand the things. तो जो भी हम चीजें लिख रहे हैं, हमारा मटेरियल ये होना चाहिए कि रिटन में दिया जाना चाहिए. ओके, देन द सेकेंड थिंग इज फॉर ई लर्निंग लोकल लैंग्वेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड. ये क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जितना हम बच्चों से कम्युनिकेट करेंगे हमारी लोकल लैंग्वेज में, जैसे मेरी कल अपने कलीग तापस से बात हो रही थी, तब तापस ने, मैंने कहा तापस आपको इंग्लिश में सुनना है कि हिंदी में सुनना है, तो उसने मजाक में कहा मैम आप बंगाली में समझा दो. तो बंगाली में समझा दो, तो मुझे चुप रहना पड़ा बिकॉज मुझे बंगाली नहीं आती है. ओके, देन ही सेड फर्स्ट लैंग्वेज शुड बी इंग्लिश, सेकंड लैंग्वेज शुड बी हिंदी, एंड थर्ड लैंग्वेज शुड बी बंगाली. ओके, so I'm not comfortable with Bengali, I'm sorry for that, but I can communicate with English and Hindi. तो local languages हमें use करना चाहिए ताकि हमारा communication बहुत easier हो जाता है समझने के लिए. Okay, then comes once the child creates interest, the method of e-learning engage the child with full attention. मैंने आपको कहा ना, आप एक बार बच्चे को आपके साथ engage करिए, आप देखना ऑटोमेटिकली वो अपनी स्क्रीन टाइम पे आके अपनी चीजों को करता है, बिकॉज वो चाहता है कि वो भी इन्वॉल्व हो इस चीजों के अंदर. तो आप फुल अटेंशन वो जब भी पे करेगा, पहले जब आप उसको एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज से उसको अट्रैक्ट करोगे, उसको कुछ एनिमेशंस, कार्टून्स, अगर आपको सपोज 1 2 3 भी सिखाना ना, तो आप उसको एनिमेशन से, कार्टून से सिखाओ. एक बास्केट में रख दो और ऊपर से एक एक आर्म ड्रॉप करो, 1 2, उसका साउंड भी प्रोड्यूस होना चाहिए, प्लस उसका कार्टून पिक्चराइजेशन भी हमें करना चाहिए डेवलप, ताकि बच्चों के लिए वो अट्रैक्टिव हो जाए. वंस इट गेट्स अट्रैक्टेड, the child will do accordingly what you want. Okay, then online courses are developed by UDL, that is Universal Design Learning. It is warming up such type of learning, give a chance to the disabled student to prefer online program in place of traditional format. Nowadays, as you all know, Universal Design Learning is very important, और हम भी इस चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं. Even I can understand many of the students are not comfortable with this e-type of learning because वो system से habitual नहीं है. But no, you take help of your, youngsters. हम अपने घर में बच्चों की help ले सकते हैं, because देखिए उनको ये इस e-learning की बहुत knowledge है, because वो right from beginning आजकल first class से जो e-learning aspect schools के अंदर start हो गया है. तो जहां पे हमें मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता था, आज शायद हमसे ज्यादा बेहतर हमारे बच्चे उस चीज को ऑपरेट कर सकते हैं. सो टेक हेल्प फ्रॉम द चाइल्ड एंड डू योर लर्निंग. देन टीचिंग ADHD चाइल्ड विद द ई-लर्निंग. हमेशा हमें जाते हैं कि उनका जो मेडिकेशंस होता है दैट इज गिवन टू देम. क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनकी एंजाइटी लेवल बहुत बड़ी होती है और उनको मेडिकेशन एज पर द डॉक्टर्स एडवाइस दिया जाता है. So what should we do? We are a special educators. हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसा शेड्यूल प्रिपेयर करना चाहिए
ताकि हम उसको मेडिसिन टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके। अगर हमने सपोज पता है कि 10 बजे बच्चा मेडिसिन लेता है, उसको ड्राउजीनेस फील होती है, वो क्लास अटेंड नहीं करता है, तो हमें उसका टाइम शिफ्ट अप करके 11, 11:30, 12 बजे कर देना चाहिए जब वो बच्चा उठता है, क्योंकि मेडिकेशन टाइम में बच्चा उसी गेयर में रहता है और बच्चा नहीं सीख पाता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। सो यू शुड ऑल्सो बी फोकस्ड विद द मेडिकेशन एस्पेक्ट। देन द पोटेंशियलिटीज एंड एबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड बी मिनिमाइज्ड व्हाइल डिस्ट्रैक्टेड एट होम। देखिए, हम कहते हैं कि स्कूल जाना, बच्चे को रोज सुबह मॉर्निंग में उठाना, 9 बजे की टैक्सी आने वाली, आप स्कूल जाओ, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। कभी कभी बच्चे नहा के नहीं आते, ब्रश करके नहीं आते हैं, तो कभी कभी उनकी जो स्किल्स होती हैं, because they do have poor and gross motor skills are poor, so they are not able to work efficiently, तो वो क्या कर सकते हैं कि जो अपना एप्लीकेशन पार्ट है वो घर में ही कर सकते हैं, परंतु आप ऐसा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करो जहां पे उनका लेस डिस्ट्रैक्शन हो। Then comes your more opportunity for movement breaks. हम चाय, कॉफी, नाश्ता, उसको 5 मिनट एक्सरसाइज कराना, योगा कराना, प्रेयर कराना, हम इसमें जो मूवमेंट्स ब्रेक दे सकते हैं उसको, बिकॉज इट अ स्ट्रेच, जैसे अभी आपको मैंने कहा आपको 4 घंटे बैठना है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, तो हम क्या करते हैं अपने टिडबिट्स यहाँ पे रखते हैं, एंड वी ऑल्सो रिफ्रेश आवरसेल्व्स, सो यू कैन ऑल्सो डू, बट टेक इनटू कंसिडरेशन कि हम उस समय ना करें जब हम अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, व्हेन वी हैव ब्रेक देन वी कैन डू दिस थिंग, ओके। Then focus on a particular specific task, difficult on online task handling. कभी कभी it becomes difficult to focus on a particular task, क्योंकि हम कितनी बार क्या करते हैं, बहुत डेविएट पर्सनालिटी लेके रहते हैं, हम कभी कभी चीजों में डेविएट हो जाते हैं, तो we are not able to focus, but try what we are doing. Then the other application of e-learning is time management is required. टाइम मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि अगर हम सपोज बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि हमने उसका क्लास मेडिकेशन के हिसाब से चेंज कर दिया है, देन ऑल्सो टाइम मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर हम 11 बजे उसका शेड्यूलिंग तय कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम 11 से 11:30 बहुत लंबा स्ट्रेच ऑफ टाइम हम क्लासेस के लिए ना लें, बिकॉज अगर हम जब लंबा टाइम लेते हैं तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड सेकेंडली, चाइल्ड सिटिंग ऑन द कंप्यूटर, ही वांट्स टू प्ले वीडियो गेम्स, गेट्स डिस्ट्रैक्टेड। हम कम से कम हमारे वीडियो गेम्स इसके ऊपर डाउनलोड करें, because the child gets distracted very easily. Then do not concentrate, so forgetting take place. हम जब बच्चा उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है तो वो याद ही नहीं रहता कि उसने क्या लर्न किया था, सो उसको कंसंट्रेशन के लिए पेरेंट्स को वहां पे साथ में बैठना बहुत जरूरी होता है ताकि डिस्ट्रैक्शंस लेस हो। होम स्ट्रेटजीज फॉर ऑनलाइन लर्निंग चैट विद द ADHD। हम किस तरीके से होम स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं ताकि हमारा जो ADHD बच्चा है वो ऑनलाइन लर्निंग को बहुत एफिशिएंटली लर्न कर सके। दैट शुड बी इनटू द माइंड ऑफ द पेरेंट्स। देन पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट शुड सिट विद द चाइल्ड। पेरेंट्स अज्यूम ऑनलाइन इज सिंपल इजी एज कंपेयर टू द एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग। पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा से ज्यादा बच्चे के साथ होना चाहिए, बिकॉज अगर कुछ कंटेंट बच्चों से छूट जाता है, बिकॉज दे नॉट एबल टू कंसंट्रेट, कि उसमें बच्चों के साथ पेरेंट्स को बैठना बहुत जरूरी होता है और वो चीज वो सीखें, ताकि कुछ भी चीज अगर छूट जाती है तो वो क्लासरूम टीचिंग से पेरेंट्स समझ के अपने बाद में कन्वीनियंट टाइम पे बच्चे को समझा सके। देन बच्चे को ड्राउजीनेस होती है, सो द क्लासरूम शुड बी आफ्टर द स्लीप एरिया। हमने इसका स्लीप का टाइम डिसाइड कर लिया। द चाइल्ड स्लीप्स आफ्टर मेडिकेशंस एट सपोज अराउंड 10 to 11, then after the classroom activity should be planned. Then place should be calm and quiet, as I already told you. Use of time managed with the time clock. बच्चे को आप हमेशा एक अलार्म घड़ी गिफ्ट करिए। अलार्म घड़ी गिफ्ट करने से क्या होता है, आप उसमें क्लासरूम का टाइम सेटअप कर दीजिए। कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने उसका अलार्म सेट कर दिया और उसे कहा कि भाई इसको क्लास अपनी जो करनी है इस समय करनी है, तो वो जैसे ही अलार्म बजता है बच्चा भी अटेंटिवली उसको सुनता है और अपनी क्लासरूम के लिए जाके अपना ऑनलाइन सेशन के सामने बैठ जाता है। एंड use of time management with time clock, that is done. और उसके बाद में allow the child to stand sometimes and sit, progress should be reviewed. Normally क्या होता है कि कभी बच्चा बैठ सकता है, कभी उठ सकता है, हमें अपना rigidity show नहीं करनी चाहिए। As for the flexibility of the child, इसमें हम देखते हैं ना progress, monitoring progress is required by the special educators और teachers. जितना progress आप बच्चों में देखोगे ना comfortable zone में, उतना ही progress आप बच्चे को सिखाने में लगा सकते हो। The thoughts which are distracting, the parents should manage. Parents को हमेशा manage करना चाहिए कि जो भी distracting thoughts हैं,
अगर सपोज रूम में कोई आता है बार बार, तो पेरेंट्स उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि व्हेन द सेशन इज गोइंग ऑन प्लीज डोंट एंटर इन द रूम, और उसके बाद आप आना। तो ये डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कभी नॉइज डिस्ट्रैक्शन होता है, इवन हमारा कुछ डिस्ट्रैक्शन दूसरी चीजों से भी हो सकता है। So parents should take careful instructions. Role of parenting is also very important. Parents should write the instructions and underline the important points. हमेशा हमें चीजों को अंडरलाइन कर देना चाहिए। जैसे हम अपने एग्जामिनेशंस में जाते थे तो हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे कि आप इंपॉर्टेंट चीज को हमेशा अंडरलाइन करना, बिकॉज द टीचर एंड अदर those people who are checking the copy, they need to be focused. उनको पता है कि आप क्या चीजों को टच कर रहे हो और कितनी इंपॉर्टेंट चीजें आप लिख रहे हो। तो हमेशा अंडरलाइन प्रोसेस शुड बी रिक्वायर्ड बाय द पेरेंट्स। देन पेरेंट्स टिप्स फॉर रीडिंग एंड नोट टेकिंग। हमेशा पेरेंट्स को हमेशा नोट टेकिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, वहां पे नोट पैड्स रखने चाहिए, वहां पे पेपर पेंसिल रखना चाहिए। और हमेशा एक एडवाइजरी चीज होती है कि वॉट एवर थिंग यू थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम बाद में भूल जाते हैं, तो हमेशा एक नोट टेकिंग होना चाहिए, ताकि बार बार बच्चे को आप वो चीजें पढ़ाओगे ना तो बच्चे के दिमाग में फिट होना चालू हो जाता है। वी कैन यूज डिफरेंट कलर्स, लाइन एंड अदर लाइन शुड हैव गैप्स जब भी हम चीजें कर रहे हैं, बिकॉज अगर हम बहुत छोटा लिखते तो बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो हमेशा एक गैप होना चाहिए उस लर्निंग मटेरियल के अंदर, ताकि जब बच्चा पढ़ता है, अगर सपोज लो वजन वाला बच्चा है या दूसरा बच्चा है वो नहीं समझ पा रहा है, तो गैप अगर स्पीच में होता है तो अपने आप समझ लेता है। रीड लाउडली द इंस्ट्रक्शंस, उसको हमेशा इंस्ट्रक्शंस बहुत लाउडली रीड करने चाहिए। फॉर देम फॉर्मल स्ट्रक्चर कांट बी यूज, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, प्ले वे मेथड। हम स्पेशल एजुकेटर्स हैं, हम जानते हैं प्ले वे मेथड क्या होता है, खेल खेल विधि में सिखाना, खेल खेल में पढ़ाना। आप उसको उस तरीके से सिखाइए ताकि सारी चीजें बच्चों के दिमाग में फिट हो जाए। Then the concept of time management is difficult to adjust with them. ठीक है, concept of time management already we have done. Then practical tips for designing accessible learning. Design with audio and visual in mind. हमेशा ऑडियो और विजुअल, जैसा आप चीजों को देख रहे हैं तो आप विजुअलाइज कर रहे हैं, ऑडियो हम सुन रहे हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं VAKT अप्रोच भी हम लोगों ने सभी ने पढ़ रखी है। ओके, तो अभी मुझे किसी ने मैसेज किया कि ऑडियो इज नॉट प्रॉपर, बट मेरी तरफ से ऑडियो बहुत की वजह से हो रहा है, तो ये चीजें प्रॉपर नहीं आ रही है। देन ऐड सबटाइटल्स टू योर वीडियो। हमेशा हमें नीचे अपने सबटाइटल्स देना चाहिए ताकि हमें समझ में आए कि हम वीडियो को क्या डिपिक्ट करना चाह रहे हैं। ऐड कैप्शंस टू इमेजेस। हमेशा कैप्शंस ऐड करने चाहिए इमेजेस के लिए, बिकॉज इट बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड। चेक योर कलर कॉन्ट्रास्ट। बहुत ज्यादा हम उसको बॉडी ना बना दे, बहुत ज्यादा हम लाइट ना बना दे, तो हमें ये चीज नहीं समझ में आती है। तो हमेशा कलर कॉन्ट्रास्ट को भी हमें चेक करना चाहिए। यूज सिमिलर ह्यूज। जो भी हम कॉन्ट्रास्टिंग कर रहे हैं, हमें एक सिमिलर टोन्स में चलना चाहिए, ताकि बच्चों के लिए एक बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है आईज के लिए। देन कंसिडर योर इंट्रैक्शंस। जो भी हम कंसिडर करते हैं इंट्रैक्शंस के लिए, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थिंक अबाउट योर चॉइस ऑफ वर्ड्स। आप क्या लेना चाहते हो, बिकॉज ये बहुत ईजियर कर देता है हमारी लर्निंग को एक्सेसिबल। तो ये डिजाइनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। देन वी कम टू द ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन। जैसे आप पिक्चर प्रेजेंटेशंस में समझ सकते हैं, एक तरफ हमारा ये बुक सेटिंग होता है और दूसरी तरफ हमारा कंप्यूटर सिस्टम है। अब हमारे लिए क्वेश्चन अराइज होता है कि हम किस एस्पेक्ट में जाएं, परंतु हमें दोनों ही एस्पेक्ट में जाना पड़ेगा। जैसे अभी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आने वाले हैं कि स्कूल्स रीओपन होने वाले हैं, तो हम किस वाले सेटिंग्स पे आएंगे, हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन पे आएंगे। अभी हमारा ऑनलाइन एजुकेशन सभी का चल रहा है, तो बोथ थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट इट इज योर इंडिविजुअल परसेप्शन, what you perceive according to the situations, according to the circumstances. Okay, then online learning. Online learning और हमारा traditional learning is also very important. It happens online. Online हम जैसा आप और मैं अभी कर रहे हैं। Traditional learning में क्या होता है? It happens offline. Because हम schools में जाते हैं, हम क्लासरूम सेटअप्स में जाते हैं, और हमारे स्कूल का भी एक फन और एंजॉयमेंट होता है। हमारे स्कूल के फ्रेंड्स बनते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो इट हैपेंस ऑफलाइन। दूसरा होता है एनी टाइम
एनी प्लेस, हम कहीं पे भी कर सकते हैं। अभी जैसे मैं बहुत जनों को देख रही हूँ, हम अपने ड्राइंग रूम्स में बैठे हुए हैं, बहुत जने हमारे बाहर के वरांडा में बैठे हुए हैं, बहुत जने कार ड्राइविंग कर रहे हैं और ईयरफोन्स प्लग कर रखे हैं अपने ईयर्स के अंदर। तो क्या है, हम कहीं पे भी ऑनलाइन फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं। ट्रेडिशनल लर्निंग में क्या होता है, इट इज फोर्स्ड इन अ शेड्यूल्ड प्लेस। इसके लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट, प्रॉपर क्लासरूम सेटिंग्स होना बहुत जरूरी होता है, तभी हमारी लर्निंग एफिशिएंटली मानी जाती है। ओके, देन ऑनलाइन लर्निंग में क्या है, फ्लेक्सिबल पेस होता है, कहीं पे भी कैसे भी। बहुत लोग होते हैं जो सोते सोते क्लास अटेंड करते हैं। आई टेल देम, कभी भी ऐसा नहीं करना है। हम सोते सोते खा लेते हैं, हम सोते सोते पढ़ लेते हैं, परंतु हमें ये नहीं करना चाहिए। हम फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, पर ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे सकते कि हम विद्या का अनादर करें, अन्न का अनादर करें। हमें जो भी हमारी पोजीशंस होती हैं, हम पोजीशन, सही पोजीशंस में बैठे और हमें अपना लेक्चर सुनना चाहिए। बिकॉज कोई चीजें हमारे माइंड के प्रोसेस से हमारे कान तक जाती है, कान से हमारे हार्ट तक आती है, और हार्ट से हमारे डायरेक्शंस देता है कि हमें क्या करना चाहिए। और हमारी ये सारी चिल्स हमारे एफरेंट न्यूरॉन्स और इफरेंट न्यूरॉन्स जो हैं, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो हमारे मैसेजेस ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन से वापस मैसेजेस आते हैं। अगर हम अधूरा ज्ञान लेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ये बहुत फ्लेक्सिबल है, पर फ्लेक्सिबल के साथ साथ हमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना बहुत जरूरी होता है। फिर इसके अंदर आता है इम्पोज्ड पेस। इम्पोज यानी जो हमारे को दूसरों के द्वारा दी जाती है। टीचर्स प्रोवाइड अस विद द स्पेस, प्रिंसिपल्स प्रोवाइड अस विद द स्पेस, एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रेडिशनल लर्निंग। उसका भी एक अलग एंजॉयमेंट होता है। ओके, देन ऑनलाइन लर्निंग 1-to-1 हम कर सकते हैं, अलोन। ये हमारे डिसेबल बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हम ग्रुप लर्निंग भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल लर्निंग भी कर सकते हैं। अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, बीइंग अ पेरेंट, हम अपने स्पेशल एजुकेटर्स को बोल सकते हैं कि मैम आप इसको अलोन स्टडी करवाओ, ताकि वो बच्चा काफी कुछ सीख सके। और ट्रेडिशनल लर्निंग में टुगेदर विद द कलीग्स, हम कलीग्स के साथ में जुड़ के काम करते हैं और उसको समझते हैं। देन ऑनलाइन लर्निंग में हम उसको इंडिपेंडेंटली यूज करते हैं। हम अच्छे मास्टर बन जाते हैं सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए, मीडिया को हैंडलिंग करने के लिए, और बहुत चीजें हम सीख जाते हैं। और इसको इंडिपेंडेंट हमारा एक लर्निंग स्टाइल होता है जिसको हम सीखते हैं। ओके, देन हमारा जो दूसरा ट्रेडिशनल लर्निंग आता है, दैट इज लर्निंग फ्रॉम ईच अदर है, और हमें दूसरा बच्चा भी सिखा जाता है। तो जब हम लर्निंग फ्रॉम ईच अदर करते हैं तो हमारे लिए बहुत एफिशिएंट हो जाता है उसको सीखना। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा लिमिटेड इंटरेक्शन। ये लिमिटेड इंटरेक्शन इसलिए हो गया, जैसे आप अभी जो मैं कर रही हूँ ऑनलाइन पे, सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ, आप लोग सिर्फ क्या कर रहे हो, ऑडिबल, यानी आप सुन रहे हो, हमारे ऑडियो को सुन रहे हो और वीडियोस को देख रहे हो, परंतु आप कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि आपको होस्ट ने म्यूट कर रखा है। जब आप अनम्यूट किए जाते हो तब आप इंटरेक्ट कर सकते हो मेरे साथ, परंतु हमारे पास लिमिटेड इंटरेक्शंस हो जाते हैं, बिकॉज हमारे पास अभी वो चीज नहीं है कि हम दो वे इंटरेक्ट कर सके। बिकॉज अगर हम इंटरेक्ट करेंगे तो हमारा साउंड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा और लोगों को नहीं सुनाई पड़ेगा। पर ट्रेडिशनल लर्निंग में हम ये बहुत इफिशिएंटली कर लेते हैं। इसमें एक्सटेंसिव इंटरेक्शन होता है। एक्सटेंसिव इंटरेक्शन इसलिए होता है क्योंकि जितना ज्यादा हम कम्युनिकेट करते हैं, जितना ज्यादा हम इंटरेक्ट करते हैं, जैसे हम कहते हैं ऑटिस्टिक बच्चे के लिए इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इनके अंदर लेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन होता है। तो जब लेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन होता है तब उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो अलूफ सा रहता है, वो अलग अपनी दुनिया में रहता है। तो उनको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इंटरेक्ट करने के लिए उनके लिए एक सोशल प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए ये एक्सटेंसिव इंटरेक्शन जो ट्रेडिशनल लर्निंग हमें प्रोवाइड करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और ये हमारा एक everybody must be waiting because time is running short, I think so. और thank you, बहुत जने I think so सो गए हैं, and जो नहीं सोए हैं, thank you for not sleeping. I hope you had a nice time for this interaction. And again, I would like to thank Mr. Tapas and all the lovely participants, because
अब मैं चाहूंगी सबको एक बार आप है ना अनम्यूट कर दो तापस। Thank you, madam. Thank you, Dr. Nita Jain. Thank you, sir. Thank you. Thank you, participants. Thank you, Lovely madam. audience and lovely host. Thank you so much. This Thank platform. you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Ma'am. Thank you, Thank ma'am. you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you and for patiently listening me. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. मैम आपने इतना अच्छा लेक्चर दिया तो सुनने मतलब बीच में उठने का मन ही नहीं किया मैम। क्या हुआ? बहुत अच्छा लेक्चर दिया मैम आपने, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, Tapan, thank you. थैंक यू मैम, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते फिर। Okay, thank you. Thank you, Tapas. Next time meeting you. Hope you see soon. কেন আসছিস কেন? তোকে দেখা যাবে তো? এখন অফ করলাম তো।